Hi everyone, Ashish Kyal here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have you all here. And today it's going to be quick about options and options mantra, the training which is going to happen on the weekend, which is going to be on 16, 17 December. And I want to set the tone for options for every one of you who are going to be attending this program. And it's going to be very, very interesting and very amazing way of learning the markets. Before I move on, I would like to know if you are all able to hear me, see me clearly. And it has been a very interesting day for the markets where prices are getting rejected from the levels of 21,000, 21,030. It's going there, it's whipsawing around there, and then reversing back on the downside. That is what markets are doing since past 2 or 3 trading sessions. And on the downside, 20,860 is the support level, and 20,867 is the low that Nifty made and bounced back from there. तो हो क्या रहा है दोस्तों, इस मार्केट में लग रहा है ऊपर जाना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा जो मूव है वो रेंज में मार्केट फंसा हुआ है. सो इफ यू आर इन अ रेंज बाउंड मार्केट that you are seeing right now, there are certain option strategies that you should form. So options are a very powerful instrument, dosto. If you know how to trade options, you can do things exceptionally well. You can form things very well. Before I can talk about options, I want to know if you are all doing well, if you are all doing fantastic, and I'm going to very quickly talk about some mantra. So options mantra जो डिटेल में है वो हम वीकेंड पे बात करने वाले 10 a.m. to 4 p.m. which is going to be on options mantra in very much in detail. But before that, today I am going to also talk about some of the mantras of options that as an option trader you should be aware of. So before I move on, I am just going to also, this is going to be live on YouTube. People who are there on YouTube, do ensure to be liking, sharing, subscribing to the channel, and on the chat I am just checking over here YouTube, just a second. Okay, what I'm trying to tell you is that it's very important when you are trading the market. It is very important that you understand the overall market direction. If market is in a non-directional pattern, you should also know about, if it is non-directional, then you should also know what to do with options. तो पहले तो हम चलते हैं एक पोल लेने के लिए. आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ऑफ यू हियर are trading options, and this is going to help me with understanding आप लोग यहाँ पर options trade करते हैं. Are you an options trader? एक poll मैंने लिया है दोस्तों Zoom पे, and people who are there on YouTube, they can join me on the Zoom platform also. I've shared across the link, and you can join me on the Zoom platform. Okay, I can see 95% of the people are trading options. That's very interesting. यहाँ पर बहुत कम जन है जो ऐसे है जो ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करते. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, एंड पीपल हु आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, दे आर अवेयर कि इस मार्केट में हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑप्शंस बायर. लेट मी आस्क यू दैट. ऑप्शंस तो सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं. चलिए एंड किया पोल. पोल पे नहीं, मैं यहां पर पूछ रहा हूं कितने लोग यहां पर ऑप्शंस बायर है जूम पे. कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज, so that I know you are trading in options. Everyone who is on the YouTube, do you have an option of raising hands on YouTube also? Can you do that on the chat, or you can just type in on the chat so that I know you are trading in options. Okay, so बहुत सारे जन जो लोग options buyer, I see majority of the people are options buyer. So I'm going to talk about certain rules, certain mantras of options. ये mantra is going to set the tone for people which is going to be who are going to be joining on the weekend. I can see some chat here. Akshata, I'm seeing you after some time, right, Akshata? Yes, of course, I remember you from the mentorship batch of July 22. I'm doing fantastic, and you like the name options mantra, which is Om. That's the entire aim. Okay, I can see Krishna is doing hedging, Sanjeev, Shekhar, so many of you are doing options. Fine. Now,
so many of you are doing options buying. लेकिन अगर आपने ये देखा होगा, in this entire week, Himam Sharif Sheikh, okay, you want to be a part of OM program, please do that. Uh, if you look at these 3-4 days of movement, I'll tell you what to do in this kind of a market and how it helps. The overall tone for the market is bullish because the overall trend is on the upside. But 21,000 has some huge buildup that has happened around 21,000, both calls and the put side. And Nifty is not able to sustain at 21,000 level. We can see rejections multiple times. It went to 21,020, it went to 21,030, now it went to 21,037. And that's very interesting. वो हर बार हाई निकाल रहा है और रिवर्स कर रहा है नीचे में. But it's also protecting the level of 20,850. It's 860, 850 ka jo zone hai. It's also protecting that. So now that we know that it's getting rejected on the upside, it's getting protected on the downside, the view is sideways as of now. Do you agree with me? And I've been buyer all the way from 19,800 levels, 19,800, not 2,800, 19,800, all the way till around 20,800, 2,900, where I booked most of the positions, and then I'm just forming strategies on the options. So I've been short on the put options primarily because right now I knew that the momentum might slow down after such a huge move and trending opportunity that the market gave. और इतने मूव के बाद में मोमेंटम अगर कम होगा मार्केट में तो आपको ऑप्शंस बाय करके पैसा कमाना मुश्किल होगा, which means you can do that intraday, but it's going to be challenging. So you should be okay taking a hit, which means taking a stop loss. Or you can also start selling options, क्योंकि इस मार्केट में सेल करके पैसा कमाना आसान होगा because market range में है और drifting upside है. Now what happened today is it again for the third time got rejected from 21,000 level. Now that is what concerns me to some extent कि यार 21,000 से वापस reject हो गया. So what I did is I converted my short put positions on the short calls also and created a hedge. There are two things. एक तो hedge बन गया, दूसरा है जो ROI मुझे पहले बन रहा था. Tell me, अभी ROI ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? If you are a serious option trader, you should be able to tell me if earlier what I was doing, I was riding the up move, which is the current up move, by selling put options. Because it got rejected, now from the upside, I even sold call options now. Now, because of this strategy, my ROI is going to increase. क्योंकि अगर आपको पुट बेचने के लिए 1,00,000 का मार्जिन लगता है तो आपको पुट और कॉल बेचने के लिए 1,10,000, 1,15,000 का ही मार्जिन लगेगा. Are you getting my point? So the margin requirement increases hardly anything, maybe 1,20,000, which means that I am only have to pay a margin of only 20% of what I was paying for put option. So अगर 1,00,000 दे रहा था जहां पे खाली पुट सेल कर पा रहा था, अभी मैं 1,20,000 दे के कॉल भी सेल कर सकता हूं. 1,20,000 में कॉल और पुट दोनों आ गए सेल करने के लिए. Because of this action of the market, my ROI has actually increased despite of expecting a bullish breakout to happen. So are you understanding that? What, in a nutshell, what are we trying to do here? I'm not trying to fight the market. I'm not saying नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, ये ऐसा ही करना चाहिए. नहीं यार, व्यू है. My view is prices should go up. But भगवान कौन है? Who is God? Price. So price is God. ભાવ ભગવાન છે. ठीक है, ભાવ ભગવાન છે, સમય બલવાન છે, ટ્રેડર પહેલવાન છે. So ભાવ ભગવાન છે, which means price is God. प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए यार, व्यू तो है, बायस तो है, लेकिन नहीं जाएगा. नीचे आया तो क्या किया स्मार्टली? हमने ये नहीं किया कि यार नहीं ऊपर नहीं गया नीचे आया, तो स्मार्टली क्या किया? स्ट्रैंगल बना दिया. अब क्या करेंगे? अभी वेट करेंगे. वेट क्या करेंगे? या तो रेंज में रह गया, ब्रिलियंट. रेंज अगर ब्रेकआउट दिया, स्ट्रैंगल को पोजीशंस जो है उस पे देखेंगे पैसा कितना बन रहा है, रिकन्वर्ट करेंगे. और अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो स्ट्रैंगल पे पैसा कमा के बैठेंगे. So there are a lot of things that you can play around with options. That's the beauty of options, which I love, because you make money despite of you are wrong or right. If you are right, you make money. If you are wrong, you still make a lot more money. So this is the beauty of options, but you should know how to apply these techniques together.
ये तो सेलिंग की बात कर रहा हूं ना. इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शंस बाइंग, for option buyer there are some mantras that I'm going to give you. Let me give you the three most important mantra today for option buyers if you want to make money from the market. First of all, when you're buying an option, the most important thing is the strike price selection for option buyer. Majority of the trader who are buying option is selecting a strike price which is out of the money strike price. Now, when you do that, chances of you making money by buying an option is reduced to below 30%. It is reduced by default to below 30%. Not for any other reason but pure mathematics. मैथमेटिक्स कहता है कि आपका चांस ऑप्शंस बाय करके पैसे कमाने में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में 30% से कम है. इफ यू बाय डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, chances of you making money buying deep out of the money option is now reduced to less than 20%. Okay. When you buy in the money option, that is the instrument where your chance of making money is approximately 60%. डेल्टा ही देख लो ना यार. एट द मनी 50% है, in the money 60% है. Little in the money I'm talking about. Out of the money delta is 40, 30, 20, which means that chances of you making money for the option mathematics is only that much. That's the delta. Now with that delta, if you are buying out of the money options, chances of you making money reduces. So पहला मंत्र जो मैं फॉलो करता हूं ट्रेड लेने के लिए वो है आई बाय एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन इफ आई हैव टू ट्रेड. वर्स्ट के सिनेरियो लिटिल आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. अगर लग रहा है कि ट्रेंड इमर्ज हुआ तो बहुत बढ़िया ट्रेंड होगा तो चलेगा. अदरवाइज इट्स ऑलवेज इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन. सो पहला मंत्र क्या आपको फॉलो करना है. Everyone who are there for the weekend class, ensure you follow this rule. You are buying options at the money या in the money. दो पैसा कम बनेगा चलेगा. Chances of me making money should increase. If I am trading, if I am playing a cricket match, it's okay if I am able to not hit a six, but at least I'll not get out. That's the compromise you are trying to do here. So by buying at the money option or in the money option, I can at least make money rather than losing by buying out of the money. Deep out of the money तो कभी नहीं लेना. जीरो हीरो वाले गेम में लोग डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेते ये सोच के कि उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा. होगा, but what is the chance of that happening is 10% or lesser. Do you want to bet on that 10% or lesser? Because when you are gambling, in gambling also, if you are playing certain games like roulette or a blackjack, it is blackjack is the only game in casino which favors you by 51% probability and 49 of the dealer. But all the other game, the odds of winning of the dealer or the odds of the house is always higher. That's how gambling is. So over here, we are not gambling. Over here, we need to see the odds. Simple game of probability. दूसरा मंत्र, when you are buying positionally, I'm talking intraday, ठीक है. When you are buying positionally, आज की एक्सपायरी का ऑप्शन या कल की एक्सपायरी का ऑप्शन, the theta is going to eat away your prices very fast. Theta means time. Time will eat away your prices very fast. So you need to ensure that when you're buying an option, you need to buy expiry which is far away at least by 15 days. क्योंकि लास्ट के 10 दिन में जो एक्सपायरी, लास्ट के 10 दिन में अगर मंथली एक्सपायरी पे आप देखें, लास्ट के 10 दिन में डिटोरिएशन हैपेंस वेरी फास्ट, which means for positional trade, positional means 2-4 दिन के होराइजन से अगर आप ले रहे हो, 5 दिन के होराइजन से ऑप्शन बाय कर रहे हो, you should prefer buying an option which is far away expiry. That's the second mantra. The most important mantra that you should not forget is understanding the trend of the market. If you are buying an option and the market goes sideways without your fault, you lose money. हुआ है लास्ट 3 दिन में. I'm asking you, be honest with me. Okay, लास्ट 3 दिन में ऐसा हुआ है आपके साथ में यार, ट्रेंड मतलब स्पॉट प्राइस वहीं पे रह गया, अंडरलाइंग प्राइस वहीं पे रह गया, लेकिन आपने नुकसान कर लिया है बिकॉज ट्रेंड इज नॉट इन योर फेवर.
ट्रेंड साइडवेज हो गया, ऑप्शन वैल्यू स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, विच मीन्स दैट आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर पुटिंग इट हियर. सो ये आपका फॉल्ट ही नहीं है. होता क्या है ना इस सिनेरियो में, लॉस्ट मनी लास्ट 2 days, लॉस्ट 15,000 बिकॉज ऑफ साइडवेज, एवरीवन. और अगर आप देखोगे, आप सर पकड़ के बैठे हो यार. निफ्टी था, मैंने जब लॉन्ग किया, निफ्टी वॉज एट 20,920 या 20,940 पे था. आज भी 20,920 के आसपास है, और फिर भी मैं लॉस कर रहा हूं अच्छा खासा. हुआ है आपका. क्योंकि यार ऑप्शन बायर्स के लिए द बिगेस्ट चैलेंज इज द ट्रेंड. So you need to know when is the momentum going to start. So the three important aspects for an option buyers, or three mantras that I am telling you right now, that is very, very important for you to understand is, first of all, select a strike price which is at the money, in the money. Secondly, you should also ensure that the expiry strike जो आप select कर रहे हो, it's expiring at least पोजिशनली. यार इंट्राडे भी कर रहे, तो यार आज की एक्सपायरी का आज ही ट्रेड लेंगे तो पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम है. इट हैज टू बी फार अवे, एक्सपायरी हैज टू बी फार अवे. तीसरी चीज, यू शुड नो मोमेंटम ऑफ द मार्केट. इट इज वेरी वेरी क्रूशियल that you understand this concept, and then you trade options, and then you apply these concepts in a very systematic fashion, and then you will be able to trade options much better. So let me show you on a chart of Nifty also very quickly, just very quickly, how to measure these kind of things on the chart directly. Okay. यहाँ पर momentum कैसे measure करें? I know you are going to ask me that question. One indicator that helps to measure momentum very religiously that I use is KST indicator. तो यहाँ पर अगर आप जाके, मैंने एक इंडिकेटर डाल दिया यहाँ पे KST. यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रख रखी है मैंने, टू सी द बिग प्लेयर्स एक्टिविटी, टू सी दी वेव काउंट है यहाँ पे जो मैंने डाल रखा है, केल्टनर चैनल मैंने डाल रखा है, KST इंडिकेटर मैंने डाल रखा है. दिस गिव्स मी दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ फिलहाल मार्केट में हो क्या रहा है. And this is very, very, very important. So if you're looking at this perspective of the market, you need to understand it in a very simplistic fashion कि कैसे इसे ट्रेड करना है. और ये निफ्टी के ऊपर है, you can directly apply it on call options. ये रहा निफ्टी का कॉल ऑप्शंस, आपने डायरेक्टली 1 आवर पे नहीं, आप 15 मिनट के चार्ट पे भी अप्लाई करके इसे देख सकते हो. नाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट यहां पर आपने अप्लाई किया है, you will realize that despite of Nifty at the same level of 20,900, the value of options have been deteriorating. तो ये किसके लिए फायदेमंद हो गया दोस्तों, बताओ. Okay, so what we are doing is we are applying Nifty options strategy, applying momentum indicator. कौन सा इंडिकेटर है? KST with volume profile and Keltner channel. ओके. एंड यहां पर अगर आप देखोगे, इफ यू लुकिंग एट दिस सिंपल चार्ट, if you're looking at this simple chart, can I say this is beneficial for call sellers as of now? And without your fault, you are losing money because you didn't understand the overall market direction. चलो लॉस भी किया. अगर मुझे पता होता यार मार्केट रेंज में रिजेक्शन आया है वापस से आज, कैन आई नॉट कन्वर्ट माई ऑप्शंस लॉन्ग पोजिशंस इनटू सम काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी? तो क्या होगा, ये लॉन्ग पोजीशंस को मैं स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करूंगा. स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने से क्या होगा, बाय कन्वर्टिंग दिस पोजीशंस इनटू अ स्ट्रैटेजिकल पोजीशन, आई एम इंश्योरिंग कि मेरा लॉस मेकिंग पोजीशन इज बैक इनटू प्रॉफिट. दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट. सुना है वर्ड एडजस्टमेंट? लेकिन होता क्या है कि हम बहुत ही रिजिड होते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा. मैं भी ऐसा ही था, आपकी बात ही नहीं है, मैं भी ऐसा ही था. But then I realized, यार, if I don't change with the market situation, I will not be able to make money. Bottom line है पैसा बनना चाहिए, मेरा व्यू राइट हो कि ना हो. And options are the best instrument to help you do that. So to measure the momentum, someone was asking, the most important thing that I use is KST indicator. With KST indicator, I at least see the measurement of options. KST से momentum of options, measurement of momentum of options is what I see.
वॉल्यूम प्रोफाइल से मुझे पता चलता है कौन से एरिया पे, कौन से लेवल पे मैक्सिमम ऑप्शन राइट हो रहा है, कौन से लेवल पे मैक्सिमम पोजीशंस क्रिएट हो रही है, वो देखता हूं मैं। दूसरी चीज है, मैं ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखता हूँ। सो ये सारी चीजों को क्लब करके फिर व्यू बनता है, और केल्टनर चैनल से पता चलता है कहां पर सिग्निफिकेंट मूव ऑप्शन दे रहा है। अगर ये चीजों को ठीक तरीके से कंबाइन करें ना, you can form very strong option buying mechanism or option buying system. That is what you can do. So फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये चीजों को मैं क्लब करता हूँ और उसके साथ में फिर हम ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल से कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। लेकिन हम करते क्या, हम डायरेक्टली हमारी मेथड पे खाली देखते हैं चार्ट पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ये समझने के साथ ही आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे बहुत सही तरीके से। सो देर आर मेनी ऑफ यू हु आर आस्किंग फॉर हाउ डू, because we have a WhatsApp community. Are you there on WhatsApp community that we have, WhatsApp channel that we have, or do you want the link for the same? तो अगर लिंक चाहिए तो मैं बहुत क्विकली व्हाट्सएप चैनल की लिंक शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे जन जो नहीं ज्वाइन किए कम्युनिटी में, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लर्निंग्स आई कीप शेयरिंग अक्रॉस चार्ट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, आई कीप शेयरिंग अक्रॉस विथ एवरी वन ऑफ यू। सो कम्युनिटी एक्सेस व्हाट्सएप का है, यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ बहुत ही क्विकली, जस्ट अ सेकेंड फॉर मेनी ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन दी। दिस इज अ फ्री कम्युनिटी एक्सेस, यहाँ पर आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, विच इज अ व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक विच यू कैन डायरेक्टली शेयर अक्रॉस, and also on YouTube. Okay. Okay, you can just join it across very quickly. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई एम गोइंग टू जस्ट इसे स्कैन करना है QR कोड से, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन देयर, और द लिंक इज शेयर्ड अक्रॉस बाय माय कलीग। आप वो लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो ये कम्युनिटी, बिकॉज यहाँ पर मैं कीप शेयरिंग अक्रॉस लॉट ऑफ लर्निंग्स, नॉलेज, एवरीथिंग। एंड यूट्यूब पे नहीं दिया है लिंक, कैन समवन प्लीज पुट इट अक्रॉस ऑन यूट्यूब ऑल्सो? आई थिंक आई आस्क्ड ट्वाइस, प्रोड्यूसर साहब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डालिए ना लिंक यूट्यूब के ऊपर, ऑलरेडी मेंशन्ड यहाँ पर। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिकेटर कौन सा प्लॉट किया है मैंने चार्ट पे? इंडिकेटर मैंने प्लॉट किया है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिए, किसी को कम्युनिटी ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने शेयर किया, आई एम नॉट, जस्ट एक सेकंड, आपने यही लिंक ज्वाइन की है कि कौन सी लिंक ज्वाइन की, मैं वो चेक कर रहा हूँ इन अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। आप लोग ने ज्वाइन कर लिया ये ग्रुप? ओके, इन सेकेंड मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। तो अभी ऐसा है दोस्तों, देखिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव अप्लाइड, आई यूज 5 मंत्र जो हम ये वीकेंड पे करने वाले, विच आई कॉल एज ऑप्शंस मंत्र। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू डीपली अबाउट व्हाट इज द Trishul program. There were many of you were asking about the Trishul program. Let me explain you that in much detail. Trishul program, which was also known as BMW, Become Market Wizard, is now known as Trishul. There are three main pillars to it. One is options mantra, one is Elliott wave, and one is Neo wave. These are the three main pillars of Trishul program. This Trishul program contains options mantra, which is starting from this weekend, which is on 16th and 17th of December. And that is going to talk about from morning 10 a.m. to 4 p.m. We are going to meet. We are going to have an online session on options where I'm going to give you 5 important mantras. The 5 important mantras that I'm going to share across is, the first one is how to use the momentum indicator KST. The second one is how to combine that with Keltner channel. These two is the very powerful weapon. Mantra weapon is what we call it. ये दो को combine करेंगे. The third thing we are going to also look at is super trend.
super trend, because these three things are the most important things for trading as an option buyer. बिकॉज अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, मोमेंटम चाहिए जो मुझे केएसटी से मिलेगा, केल्टनर चैनल चाहिए जो मुझे ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट पता चलेगा, मुझे तीसरी चीज है ट्रेंड कैसे फॉलो करना है, मुझे राइड कैसे करना है, मुझे सिग्नल कैसे मिलता है सुपर ट्रेंड से, सुपर ट्रेंड चाहिए। ये तीन चीज मिली मुझे। इसके साथ में मैं कंबाइन करूंगा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के बेसिस पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र जो हम कंबाइन करेंगे वो है प्राइस एक्शन। सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे हमें ऑप्शंस में ट्रेड लेना है, एज अ बायर क्या करना है। साथ ही में देर आर मेनी ऑफ यू हु वांट्स टू ट्रेड ऑप्शंस नॉट एज अ बायर बट आल्सो एज एन ऑप्शन for generating that passive source of income. Let me ask you, how many of you here want to generate the passive source of income by trading in options? Parallel source of income या passive source of income कि यार महीने का अगर मैं साल का अराउंड 24%, 30%, 35% बना सकता हूँ, दैट्स नॉट स्मॉल राइट। जहां एफडी रेट 6-7% चल रही है, वहां पे अगर आपने 12% भी बनाया, 18% भी बनाया, 18%, कम है क्या यार, 24%, that is passive source of income. For generating that passive source of income or parallel source of income, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत क्लियरली वो पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए कैपिटल अगर आपकी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख है तो आप कर सकते हो, बिकॉज वो कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करना पॉसिबल है। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या लगेगा हमें, तो ये 5 मंत्र तो हो गए हमारे ऑप्शंस बाइंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 लाख पे भी आप कर सकते हो, ऑप्शन राइट आप कर सकते हो, 1 लाख का कैपिटल लगेगा, एक ही लॉट कर पाओगे लेकिन कर सकते हो। ओके, ऑप्शन सेलिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मूव विथ रिस्पेक्ट टू दी ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, जिससे पता चलता है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या है। ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल से पता चलता है कहां पर बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी है। बहुत क्लियरली पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स ने कहां पर पोजीशन बना रखी, वो लोग क्या कर रहे हैं। ये है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चलता है कि कहां पर लोग, अगेन बिग प्लेयर्स, कौन सी एरिया में उन्होंने पोजीशंस बनाई है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है मार्केट का। सो दीज आर द थिंग्स फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मुझे पता है कि यार 20,600 के ऊपर बहुत सारी वॉल्यूम्स हुई है, इफ आई नो दैट, I know 20 breaking below that 20,600 is going to be difficult for market, because that's the area where huge volumes have taken place. If I know 21,000 के आसपास बड़ी वॉल्यूम्स हो रही है, which means ये एरिया को क्रॉस करना मुश्किल होगा, और ये एरिया क्रॉस होगी डायरेक्ट गैप के साथ अगर ब्रेक करना है तो। गैप के बिना ये एरिया क्रॉस होना मुश्किल है। सो ये चीज मुझे पता चलती है बिग प्लेयर्स एक्टिविटी। So by combining the 5 mantras, I become an option buyer. By using the 2 different mantras of volume profile and open interest profile, I can now become an option seller also. Combining these, we can form a classic options complete trading system, which we are going to do over the weekend. Before that, there are many of you who are trading options or might not know much about options. So we are giving you a free pre-session video, which is going to talk about how to look at options as a basic way. That's what we are going to see. Many of you also want to know कि यार मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन भी होता है ऑप्शंस में, एडजस्टमेंट्स भी होते हैं ऑप्शन में, वो कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन द वीकेंड। उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ग्रीक्स को ऑप्शन के। लोग बोलते हैं व्हाई यू हैव टू गो ऑन द ग्रीक्स ऑफ द ऑप्शन। अरे यार ग्रीक्स का मतलब क्या, मैं आपको 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर सकता हूं, मालूम है, करूं एक्सप्लेन। इफ यू हैव टाइम आई कैन एक्सप्लेन यू इन लेस देन अ मिनट व्हाट आर द ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन दैट यू शुड रिमेंबर। फर्स्ट, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होता है यार, कितना ऑप्शन का प्राइस चेंज होगा स्पॉट प्राइस के हिसाब से, डेल्टा है।
स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपया ऊपर गया, मेरा ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा पता तो होना चाहिए। लोग बोलते पता ही नहीं है। अगर मेरा डेल्टा 0.50 का है, मतलब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, 50 पॉइंट ऑप्शन बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या सोचना है। दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट इज वेगा। अगर वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हो रही है तो मेरा ऑप्शन प्राइस कितना ऊपर नीचे होगा, दैट इज वेगा। अगर वोलेटिलिटी 1% से बढ़ रही है, माई ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज बाय 10 पॉइंट्स। दैट इज व्हाट आई विल नो कि यार अच्छा है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मैं ऑप्शन बाय रू, इट्स गुड, दैट इज वेगा। थीटा। अगर मार्केट 3 दिन तक यही रह गया, मैं कितना लॉस करूंगा एज एन ऑप्शन बायर, that is theta, which means if Nifty did not move, option value will deteriorate. That is nothing but time, and that is theta. These are the three main Greeks. दूसरा होता है, वो चीजें जाने दो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है गामा और वो सब चीजों पे। हमारे लिए ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर आपने ये वेबिनार से खाली ये 3 इंडिकेटर के बारे में कॉन्सेप्ट को समझ लिया जो मैंने अभी कहा, आपका ग्रीक्स हो गया। So this is how you have to look at it. So once we know the Greeks, we are not worried. These Greeks will help me for strike price selection, for stop loss placement, for knowing the risk, for knowing मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ फ्यूचर में। That is what it's required. And that is what Greeks are. थीटा टी से कैसे याद रखना है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। थीटा मीन्स टी आ रहा है तो टाइम। वेगा मीन्स वोलेटिलिटी, वी और वी, वोलेटिलिटी का इंपैक्ट कितना हुआ। और डेल्टा तो आप याद रख सकते हैं, दिल्ली कितना दूर है, तो डेल्टा याद रख सकते हैं आप उस तरीके से कि भाई कितना मूव आएगा, दिल्ली कितना दूर है, मतलब कितना मूव आएगा, कितना दूर जाएगा, डेल्टा। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर, दैट्स व्हाट डेल्टा टेल्स मी। समझा कि नहीं यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ ऑप्शंस के फ्रंट पे। सो ऑप्शंस मंत्र में ये सारी चीजों को हम क्लब करेंगे साथ में दोस्तों वीकेंड पे। इन चीजों को कंबाइन करके हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे और वो सिस्टम पे देखेंगे कैसे ट्रेड निकालना है। ये हो गया। इसके बाद में एक फॉलोअप सेशन भी होगा। फॉलोअप सेशन के साथ में आपको सीखने मिलेगा जो भी क्वेरी है जो आप अप्लाई करो क्या चैलेंज है। ये हो गया ऑप्शंस मंत्र। सो त्रिशूल का एक लेग कंप्लीट किया। दूसरा लेग एलियट वेव। अगर आपने त्रिशूल के लिए रजिस्टर किया है, यू विल गेट एक्सेस टू एलियट वेव वीडियोस। 6 आवर्स का वीडियो है, बेसिक एलियट वेव के बारे में आप समझोगे, देखोगे, और एलियट वेव से आप मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हो। कल अगर आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, लॉन्ग टर्म नहीं मीडियम टर्म फोरकास्ट किया है निफ्टी का, saying that this is the mother of all bull markets. If it is the mother of all bull markets, why I am saying that? I am just not saying ऐसे ही बोलने के लिए. There is some reasoning because of which I am saying this is the mother of all bull markets, and the reasoning is simple है. The mother of all bull markets because we are headed much higher eventually over the medium term. मतलब एक क्वार्टर में, 3 महीने 4 महीने में अच्छा मूव मिलने वाला ऊपर की ओर। सो ये फोरकास्ट कैसे किया, लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थर्ड पिलर ऑफ त्रिशूल विच इज नियो वेव। नियो वेव में which is going to happen in January, we are going to look at the concepts of wave theory in again in 2 days online program. And this program is especially for people who want to forecast the market. आप में, let me ask you, how many of you want to forecast the market? What is going to happen tomorrow, 5 days down the line, 5 months down the line, 5 years down the line? कितने लोग वो forecast करना चाहते हैं? Okay, I can see so many of you are raising the hand. Someone is saying, I want to forecast. Nikul, Yugandhar, Mahesh. There are so many of you. I'm so sorry. Not taking out everyone. Dipesh, every one of you. You can forecast the name. Forecast the market. Now, if you are able to forecast the market 5 days, 5 hours later, 5 months later, expiry कहाँ हो सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबल है करना यूजिंग द थर्ड पिलर विच आई कॉल एज नियो वेव। नियो वेव के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंबाइन करना होता है इचिमोको क्लाउड, which is a classic indicator. Along with that, we have a two-stage confirmation technique for which we are going to use NeoWave. Along with NeoWave, we are also going to be combining in a very, very simple aspect the patterns of wave. किस तरीके से डायमेट्रिक पैटर्न को देखना है, ये सारी चीजें फोरकास्टिंग टूल्स में आती है। So the Trishul that I am talking about is combining
all of these techniques together. It's marrying the techniques of options, it's marrying the techniques of forecasting, and you can apply this on stocks also. So लोगों को लगता है ये जो वीकेंड पे ट्रेनिंग होने वाली है 16-17 को, ये खाली ऑप्शंस वालों के लिए नहीं, ये मेथड्स आप स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो. अगर आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहते, यू डायरेक्टली अप्लाई ऑन सर्टेन टेक्निक्स ऑन स्टॉक्स. स्टॉक्स हैज वॉल्यूम प्रोफाइल, केल्टनर चैनल, केएसटी, ये सारी चीजें सुपर ट्रेंड आप सब स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हो. सो यू कैन डू दीज थिंग्स डायरेक्टली ऑन स्टॉक्स ऑल्सो. So the three pillars are this, and this is how I use to form trade. If market goes in my favor, I make money. If market does not go the way I expected, I still make more money, because then I can form some option strategy. If I have to have a view of the market basis of wave theory, I captured 1,000 points. If I do not have a view, it's going sideways, I am still able to capture 300 points of volatility by selling options either side. So this is how you have to play around. To not force yourself on the options, on the market, on the trend, but learn, read, understand the heartbeat of the market, and then you should be trading it. You can apply these techniques on 15 minutes, 1 hour, daily, weekly. You can apply these techniques on any and every time frame. लेकिन दोस्तों एक चीज समझना, सीखना समझ के और सही एप्लीकेशन करना है. क्योंकि बहुत सारे जन जिन्होंने पढ़ा है, सीखा है, कहीं से भी बहुत गलत तरीके से सीखा है और सही चीजों को रॉन्ग अप्लाई किया. आई एम श्योर every one of you apply RSI, but very few are applying RSI as a powerful indicator in a very, very correct fashion. Everyone looking at price action. जिसको भी मैं पूछता हूँ, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, मैं पूछता हूँ यार होता क्या है प्राइस एक्शन, वो तो बताओ. कुछ नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अरे इतना ही होता तो बात ही क्या थी, तो और कोई कुछ पढ़ता ही क्यों. सो पॉइंट है, you can be a price action trader, but are you on the right path of it? Are you looking at it in the right way? That is what is the key. The application is the key. The next most important thing is what? When to apply which indicator is the most important aspect. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, बॉलिंग अ बैंड्स विल नॉट वर्क. if market sideways hai, moving averages will not work. If market is whipsawing sharply either side, option selling will not work. So कौन सी मेथड को कौन से टाइम पे अप्लाई करना है, that becomes all the more crucial, and that is the key aspect of it. We do that, all of those things in Brahmastra. Brahmastra is mentorship which covers. So if you are a part of Brahmastra, are there people from Brahmastra? If you are a part of Brahmastra, you are already a part of options trading, options mantra, which is going to happen the weekend. Sutra of waves, जो wave program हम करने वाले जनवरी में, we call it as Sutra of waves. Options mantra is Om. Sutra of waves is So. So means बोना, बीज बोते हैं उसे हम कहते हैं so. So that is what is called. And Trishul is combining both of these programs, and you can be a part of Trishul program. So there are so many of you who have come here who is listening to me since some time and enjoying about options. So if you're really liking what I'm trying to tell you, and if you think I'm making sense to you, you should be a part of this Trishul program. Okay, BMW is Trishul right now. So I can see Raj is already a part of it. Megha is wanting to be a part of it. And so many of you are already wanting to be a part of it. My colleague will right now share the link, and you have opportunity to be a part of this Trishul program if you registering today itself. क्योंकि आप लोग आज आए हैं, मुझे सुन रहे, so I am willing to give away a few more seats for people who are coming here in the offer price, which is closed for everyone else, But since you are here in this webinar and given your time to me, I am sharing across the link with you all. So करिए राहुल. देखिए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो टाइम कभी मिलने वाला ही नहीं है. ये खुद के लिए इन्वेस्टमेंट है, खुद के लिए. दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इनटू आवरसेल्फ एज अ नॉलेज. See, to give you a brief, I've also written a book. This is the book which I have authored, which is published worldwide. ये book है, ये मैंने लिखी है.
which is published worldwide. And सोचो ना, अगर मैंने ये बुक लिखी है, पब्लिश हुई है all over the world, so why not to be a part of someone who has written a book? I won Khiladi #1 show so many times. Okay, I can see so many of you have already joined it. Uh, okay, क्या बात है, Rahul, you attend all the webinars. I can see Guru Kripal Gill has already now joined the OM program. Himam Sharif Sheikh has joined the program. क्या बात है, awesome. I can see Dipesh has joined the program. You already have the book. Velenskar has joined the program. So यहाँ पर after the program also, there will be a follow-up session which will be given to you. After that, there will be a traders forum where you will be posting your queries and doubts, and there will be others who are anyways going to help you out. So you will be learning. The learning just starts here. Learning doesn't end here. Okay, so the learning starts, and you can be a part of this Trishul program. You can be a part of this wonderful learning, and this is going to be a simply awesome way for you to be learning the entire science of how to trade this market. I'll just share across very quickly a few link. What is the link? Someone is asking. I've shared already the link. Let me just redo it again. Over here, यहाँ पर ये रही link आप लोगों के लिए. You can be a part of that, and you can simply join the program and be a part of it. I'm open for questions, guys. If you have any questions, you can simply ask me, and here is the link for the program. And as I said, the offer pricing is valid only for today. Tomorrow it will not be there because you are giving your time to me, and I want to sincerely appreciate the efforts that you are putting in. Okay, Mr. Gill has joined the program on Trishul. Glad to know that. And the questions, I am taking up the questions. Sir, what is the capital required for Trishul? I would suggest यार at least you need 1 lakh rupees capital. तो ही आप कुछ कर पाएंगे. उसमें ऑप्शन बाइंग में भी करना है. कुछ भी चीज मीनिंगफुल ट्रेड करने के लिए 1 लाख का कैपिटल आपको चाहिए. इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. दैट्स माय स्टैंड. आप 50,000 में स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. Okay, effective trading in financial markets using technical analysis. I'm not sure which links are you sharing, Priyanka. There has to be just one link, which is wavestrategy.com/books. I'm not sure which are the other links. So please use that one. And why are you doing it right now? Okay. There is duration of the training videos. The video, ये question था मेरा miss out हो गया. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, ये जो वीडियो है हमारा, ये लाइव सेशन होगा, वीडियो नहीं है. 16-17 को लाइव होगा, और जनवरी में भी लाइव होने वाला है. और साथ में इसके वीडियोस आपको 1 मंथ के लिए दिए जाएंगे. सो यू विल बी एबल टू गो थ्रू द वीडियोस ऑल्सो. ओके. सेटिंग्स फॉर द केएसटी, बॉलिंगर बैंड, ये सारी चीजें हम वीकेंड पे करेंगे. रिस्क मनी मैनेजमेंट ऑप्शन लर्निंग में, यस मनीष, वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द very clearly we will be looking at the aspect of, just a second. हाँ, we will be looking at stop loss placement. क्या रिस्क होगा, कहाँ स्टॉप लगाना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. Does options mantra consist of option selling strategy? Yes, it will consist of option selling strategy also. और अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हुआ है तो क्या करना है वो भी है. I don't reply to your questions. नहीं, ऐसा नहीं है. There are so many people. If I have mistaken your question, please miss out your question. There's no such intention यार. मैं आपको क्यों मिस करूंगा. My book is available. The link will be shared by my colleague. वहां से आप ले सकते हो. Nifty Bank Nifty program. Want to join home program? There is Nifty and Bank Nifty program is free. I'm not sure, Ramesh Dandekar. What's the question? There is not. It's not free. Megha Chaudhary, on the link, if you go on the link, you will get all the details of how to go about it. I've just shared the link पे जाइए, आप वहां से register कर सकते हैं. Many are doing it right now, so you will have to do it now before we stop the registration. Video is for a period of 1 month. Yes. This, even if you are not able to see, Abhishek, अगर आप नहीं join कर पा रहे इस weekend पे,
तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो आई एम नॉट श्योर, दैट विल नॉट हैपन मे बी 5 months from now. So it's up to you if you want to delay your learnings about this science of trading by another 5 months, 6 months or so. Okay. निफ्टी पाथ के बारे में अभी हम नहीं बात करें, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आई एम लुकिंग एट इट. ओके, जस्ट वेरी क्विकली. So this is what we are going to look at it. I think I have answered most of the questions. There are many questions that are pouring in. And यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर कैन आई ऑल्सो जनरेट पैसिव इनकम विद जॉब? यस, दैट्स द एम. कि अगर आप पैरेलली बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कैसे ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं, इट्स अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट. कैसे यूज करना है, यू कैन डू दैट. एंड इफ यू आर ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है हमारा? OM, which is happening this weekend. That's the best course that you can look at it for the option buying. That's a live program, as I'm talking about. And people who are looking for forecasting, wave theory is the best thing. So you will also get access to the wave theory and you will get all of those things. But you have to act now. And यहाँ पर मैं बहुत ही quickly एक poll भी ले रहा हूँ, which is going to be about which path to the financial freedom. That's the poll which I am taking right now. And यहाँ पर बहुत क्विकली, एंड आई एम आल्सो आंसरिंग द क्वेश्चंस वेरी वेरी quick. There are so many questions. Do we need to see the Greeks for option trading? Okay. So see, options trading के लिए ग्रीक्स आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रीक्स पता है तो क्यों नहीं यूज करें उस चीज को, कि भाई इफ यू नो, थोड़ा सा सिंपल वे में अगर हम देखेंगे, देन व्हाई नॉट टू look at it, why not to do it? So you can always look at it about option Greeks, and बहुत simple है, it is not complicated, it is easy. So you can definitely do that. You can look at option Greeks also. The other question is how to deal with VIX as an option buyer. Option buyer को VIX का क्या टेंशन है यार? ऑप्शन बायर के लिए तो VIX बढ़ेगा तो अच्छा है, बल्कि ऑप्शन सेलर को VIX का टेंशन होना चाहिए. ऑप्शन बायर के लिए यू डोंट हैव टू वरी. Option buyer के लिए you have to deal with time, you have to deal with theta. That is what is going to be important. Offline courses नहीं होने वाले. So if I have no such plans as of now, as of today, कि हम offline course करेंगे कुछ भी. Okay, so that is all. These are the things that are important. तो जाते जाते संक्षेप में कौन से मंत्र के बारे में आज बात की हमने? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, एक्सपायरी एंड मोमेंटम, ट्रेंड देखने के लिए. कौन से मंत्र हम वीकेंड पे करने वाले हैं? हम करने वाले ऑप्शंस मंत्र में कौन सी चीज? प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम, केएसटी, केल्टनर, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू लुक एट ए सुपर ट्रेंड. What are we going to do in January in the wave concepts? You'll be looking at the Trishul program, you look at Elliott wave, you look at Neo wave, and we will be looking at two-stage confirmation techniques. We'll be looking at Ichimoku cloud. We will be looking at setups basis of that. So I'm going to give you clear-cut setups जो आप next day से apply कर सकते हो इस methods के basis पे. Okay, and recordings of course will be given to you. अगर आपने, so there are people who have registered today. I can see Swami has registered right now. So Swami, you are going to get, as I said, you are going to get right now, you will be getting pre-session video जो आपको go through करना है. And after you go through the pre-session video, you'll attend the live and then you will go there. There is another question Abhishek is asking, if I register and see the recordings, not able to attend live, you will be attending the follow-up session, which is going to happen. And you will be able to post your queries, questions in a traders forum. जो access मैं आपको दूंगा, वहाँ पे आप post कर पाएंगे, and वहाँ पर learning will continue. So you will be still able to get it. So you don't have to worry at all. Rahul Rajput is also requiring it. Do not worry. Pre-session video का access will be set. You will get it. My team is going to set it up. अब हमारी जो वेबसाइट है, everything will be communicated across to you, so you don't have to worry at all. In case you need any help, you can also contact on, I'll just share across the number 9920422202. That's the contact number. You can just call on this number.
and this will be also for the YouTube. Please share across the number so people can do that. Awesome guys, so आज के लिए इतना ही था. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आंसर कर दिए. अगर रह गए तो it's no intention of not taking up your questions, but be a part of this wonderful journey of Om and of Sutra of Waves combined together. We call it as Trishul, and it will be an amazing way of connecting the entire sacred science. I call it like a sacred science together. इसलिए तो नाम भी ऐसे रखे. It's a sacred science जो हम use करेंगे to forecast and trade in the markets. Do not be disheartened if your strategy is not working right now. You just need a tweak, and I will give you what is required for that. Thank you very much, guys. Have a wonderful day. Become a wonderful trader. And options, mantra people, be ready. We are going to have an amazing weekend, which is going to have an amazing way of looking at things, and you are simply going to love it. Okay. Thank you very much. And I'm sure you will become a wonderful trader.